Hello, viewers. Welcome to SuperGrads. I'm your mentor and guide, Vrinda. And in this session, we will talk about the basics of IPM verbal ability section. So, आप लोगों में से जो बच्चे IPM इंदौर 2023 का पेपर लिखना चाहते हैं, ये सेशन स्पेशली उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. Because this is the first section amongst a series of sessions that SuperGrads has launched to help you best prepare for this entrance test. And what better way to understand the demand of any entrance test than to look at its previous year's paper and gauge its level of difficulty. So आज इस सेशन में हम देखेंगे आईपी मैट इंदौर 2022 का पेपर to understand its structure, its level of difficulty, and the expected topics to prepare. Now, first thing first, IPMAT Indore completely computer-based test है. Verbal ability section में +4 - 1 की marking scheme होती है. So if you do a question right, you get +4, and if you make a mistake, you're rewarded a -1 mark. So you have to be careful with that. Now let's understand the paper that was there. So आप जब अपना QA का पेपर खत्म करते हैं एक्चुअल पेपर में एंड लास्ट सेक्शन वर्बल एबिलिटी पे आते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू गेट टू सी ऑन योर स्क्रीन विल बी बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सो दे गिव यू अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नाउ जनरली ये जो पैसेजेस होते हैं ये बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स सच एज से इकोनॉमिक टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अच्छे रिनाउंड न्यूज़पेपर से के आर्टिकल्स पे जनरली बेस्ड होते हैं एंड द पैसेज एज यू कैन सी इज मॉडरेटली लॉन्ग एंड इस पे मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस पर पैसेज बेस्ड होते हैं और ऐसे 2 पैसेजेस मिनिमम वो देते हैं अपने पेपर में सो फर्स्ट सेक्शन इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि मॉडरेटली लॉन्ग होगा उस पर 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे देन द सेकंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देन अगेन 5 to 6 to maybe 7 क्वेश्चंस ये फर्स्ट सेक्शन होता है पेपर का सो अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 क्वेश्चंस are there in this section alone. So I believe you will understand. I hope you will understand. Yeah, you will agree that this is a very important section of the paper. तो अगर आप इस सेक्शन में एस करना चाहते हैं अच्छा करना चाहते हैं तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि करना क्या है पैसेज पढ़ेंगे उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड वी मल्टीपल चॉइस आंसर्स में से चूज करना है तो बहुत मुश्किल तो नहीं होना चाहिए सो अ बिट ऑफ स्ट्रैटेजी अ लिटिल बिट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड राइटिंग अ फ्यू मॉक्स शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस सेक्शन को हैंडल कैसे करना है नाउ क्वेश्चंस जनरली 3 कैटेगरीज के होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पैराफ्रेज्ड होते हैं सो दे राइट समथिंग इन द पैसेज दे द क्वेश्चन व्हिच इज जनरली डायरेक्ट आई मीन इफ अ क्वेश्चन इज जनरली डायरेक्ट वो पैराफ्रेज्ड होगा so they will use some other synonyms which would mean the same thing, and they would ask you whether you've seen that in the passage or not. Indirect questions may they ask you questions that you will have to understand. You will have to read between the lines to get the answer to these questions. And then contextual vocabulary based questions. So they pick up a word from the passage, they give you multiple answer choices, and they ask you the meaning of the word generally. So that's the structure of the first section. Again, multiple answer choice based hai. +4 - 1 का मार्किंग स्कीम है बहुत स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पेशेंस एंड यू कैन रियली एस दिस सेक्शन नाउ जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के बाद जो सेक्शन आता है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है एंड जनरली यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चंस वो देते हैं idioms and phrases based so now the idioms can be sometimes very easy or very difficult मगर ये section मांगता है consistency in understanding the idioms and phrases. Now vocabulary section में ही इसे consider किया जाता है and क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के questions IPMAT not just IPMAT Indore the other similar entrance test they ask questions based on this so ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है so if you really want to do well in the English section the verbal ability section of IPMAT Indore and similar entrance test make sure कि आप idioms and phrases को thoroughly practice करें and let me help you here
The good news that I have for you is that we have started a series wherein we will talk about each and every topic in detail in the sessions to follow. So हो सकता है अगला सेशन जो इंग्लिश का हो उसमें हम idioms and phrases पे ही बात करें, तो बहुत सारे idioms को किसी न किसी अच्छे मेथड से हम पढ़ेंगे समझेंगे और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे. So you better stay connected in the sessions to follow. Now, the section that we get to see after the vocabulary section is generally based on grammar. So IPMAT Indore directly कभी भी errors नहीं पूछता. So they won't ask you to transform a sentence from active to passive or from direct to indirect. They generally give you a statement, underline a part of the statement. So there are four options to choose from, and you have to find the statement that best replaces the faulty part, the underlined part. So generally 4 to 5 questions expected होते हैं. The errors are around parts of speech, parallelism, modifiers, tenses, um, and similar topics. So have a good understanding of these topics, and I'm sure you can boost your score here because grammar में क्या है आपको बहुत नहीं सोचना पड़ता. So when you look at the faulty part, you try to identify the error. If you can identify the error, you will always know what the right answer is. To choose the right answer, take a good look at the remaining options. Don't rush, don't be hasty, and boost your score and save time also in this section. So that's the beauty of that section. Now, generally, after the grammar section comes the para completion based question. Now, here, as you can see, they take a paragraph, they remove either the first line, the middle line, or the last line of the passage, and they give you four options to choose from. Now, here they check your logical abilities, your रीजनिंग abilities. So आंसर जो है गिवन ऑप्शन से हमें चूज करना है. So you need to understand the surrounding text, you need to understand the information that's there, the scope, the language, the tone of the writer, and then you have to choose from the given option. This section can be slightly tricky for those students who are not exactly readers, but जो बच्चे रीडिंग करते हैं, जो एविड रीडर्स होते हैं, दे गेट द आंसर्स इंस्टिंक्टिवली बिकॉज ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, द एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम फार फ्रॉम द ट्री. सो जो मिसिंग पार्ट होता है वो बहुत क्लोज इन स्कोप, मीनिंग, लॉजिकल फ्लो एंड टोन उस पार्ट से होता है जो ऑलरेडी गिवन होता है. सो read well, read a lot if you want to do well in this section of the paper. Now, before I take you to the rest of the questions, let's just take a look at what SuperGrads has done for you. So we have launched the Swayam batch for self-paced learners. So there are some good lectures for all those of you who are self-paced learners, and you have mentorship support, doubt clearing support, one mock reviews, and so many other benefits. So go ahead, give a call to the support team and find out more about this. Let's take a look at the next question type, which is based on vocab. Now, vocabulary is a favorite topic of IPMAT Indore. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ है जिसमें 4 blanks हैं and there are 4 options to choose from. So you need to see which option fits best in all the 4 blanks. Now ये single filler से double filler से triple filler से 4 filler तक भी IPMAT इंदौर ने दिया है. नाउ इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि सिंगल फिलर है कि डबल है कि ट्रिपल है कि 4 blanks है. अगर हम हमारा अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग है, अगर हम समझते हैं कि किसी ब्लैंक में वर्ब आ सकता है, कि एडजेक्टिव आ सकता है, कि एडवर्ब, कि नाउन, कि प्रोनाउन, क्या डिमांड है उसकी, एंड रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेन ये एक ऐसा सेक्शन है जहां हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. नाउ सी, IPMAT Indore has been very consistent here because उन्हें ऐसे बच्चे चाहिए जिन्हें कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है. सो अगर आप वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उसका कॉनोटेशन समझते हैं, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो समझते हैं, तो आप बहुत आराम से बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे एंड आप बहुत आसानी से सही आंसर चॉइस को गिवन ब्लैंक में फिट कर पाएंगे. एंड यू नो व्हाट द ब्यूटी, चाहे वो सिंगल हो चाहे 4 फिलर ब्लैंक हो, अगर कोई भी एक वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस उस ब्लैंक में फिट नहीं होता तो वो पूरा ऑप्शन एलिमिनेट होता है. सो यू रियली डोंट हैव टू वरी इफ यू कैन अंडरस्टैंड. सी, सर्टेन थिंग्स need hard work, the others can be done or achieved with smart work.
So you can expect at least 5 to 6 questions based on this section, vocabulary based section. So let's see what other things does this paper offer to us. Okay, the next type of question is again based on vocabulary. Now here, this is again the favorite, one of the favorite question types of IPMAT Indore. ये हमेशा आता है और कम से कम 4 से 5 questions इस टॉपिक पे बेस्ड होते हैं. So they give you 4 options. हर ऑप्शन में कोई एक वर्ड होता है जो रिपीट हो रहा होता है एंड उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक सेंटेंस में उस वर्ड का यूसेज गलत होता है. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड इज कि वो सेम वर्ड होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में वो चारों सेंटेंस में यूज हुआ होता है. 3 जगह यूसेज इज राइट कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली एंड एक सेंटेंस में द यूसेज इज रॉन्ग. Now you need to identify that word and you need to mark that wrong sentence, the wrong option as your answer choice. है ना बहुत इंटरेस्टिंग. सो अगेन थोड़ी सी वोकेबलरी अगर हमारी स्ट्रांग है, हम थोड़ा सा वर्ड सेट कंफ्यूज या होमोनियम टाइप के वर्ड्स को अच्छी तरह समझते हैं, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां आपको करने में मजा भी बहुत आएगा एंड आप अपना स्कोर तो अच्छा कर ही सकते हो. सो देर आर गुड 4 to 5 questions based on this topic. And then comes the last section of the paper, which a lot of students find a little challenging. That is questions based on para jumbles. Now, IPMAT Indore, सिर्फ IPMAT Indore में इस सेक्शन के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होते, मल्टीपल आंसर चॉइसेस नहीं होते. सो दे गिव यू 4 to 5 sentences in each question, and they ask you to arrange them in a proper sequence and type this sequence in the space provided. Now, this is called type in answer type parajumble based questions, and there is negative marking even for this section. So, इस section को मास्टर करने के लिए रीडिंग के अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. सो रीडिंग करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेक्शन भी डुएबल सेक्शन होता है. बिकॉज एज यू कैन सी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते. द सेंटेंसेस मे बी दे मे बी 4 to 5 sentences बट दे आर नॉट वेरी ट्रिकी. एंड ये अच्छी बात इस सेक्शन की ये है कि ये बहुत स्ट्रैटेजी बेस्ड है. सो अगर आप पैसेज ओपनर ढूंढ सकते हैं, आप मैंडेटरी पेयर्स ढूंढ सकते हैं, आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ढूंढ सकते हैं, आप एक क्रोनोलॉजी ढूंढ सकते हैं, तो ये सेक्शन भी एक डुएबल सेक्शन होता है. सो दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर. Now, all in all, one thing that I can say about IPMAT Indore paper is that they do not want students who are superhuman, super intelligent. They want students who want to get into IPMAT, IIM Indore. So they look for students who are hardworking and smart working as well. So अगर आप इस पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, number one, watch our series. Number two, work hard, do a lot of reading, embrace the language, and strategy based hai most of the topics. So strategies समझिए, and I'm sure you will do well in this section of the vulnerability section of IIM Indore. Now, with this, I come to the end of this session. I hope you were able to gain something. I sincerely hope that you will stay connected. You will join us in the sessions to follow, क्योंकि आने वाले sessions में हम हर individual topic को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजी एंड बहुत सारी और टिप्स आपको ये पेपर को प्रिपेयर करने के लिए. सो स्टे कनेक्टेड. लव यू ऑल. बाय बाय.